Seeing the kind of figures released for the Indian economy, which were discussed yesterday, and more importantly, seeing the kind of reaction of the government through no less than its finance minister, I think it is fair to say that the Bharatiya Janata Party has become India's biggest NPA, non-performing asset, or I would say non-performing non-asset. The ease of doing business appears to have become the seas of doing business. The lion who was roaring "Make in India" appears to be snoozing. Yesterday, Mr. Rahul Gandhi asked pointed questions from the Prime Minister about his vision of Make in India, about the reality on the ground of Make in India, and in particular about the state of farmers and farmer distress in India. We continue to have eloquent silence from the Prime Minister, who is on his travels abroad, and we have a series of ambiguities, generalities, and vague reassurances by the Finance Minister. The best way to describe the government's press conference yesterday is to use the adjectives of utter confusion, perplexity, hypocrisy, bewilderment, and even bemusement. Firstly, there is no specific answer to the pointed question, how are you down to 6.1%? Second, there is no frank regret, sorrow, or apology that this is exactly what they were told by all of us in November and onwards from last year. There is no recognition and realization. Thirdly, there is no answer to the questions yesterday at the press conference, not even answer to basic questions. The best answer you got was demonetization cannot be identified as the sole reason for low GDP growth. Now you decide if that's a good enough answer. Then the second answer you got was sometimes 7 to 8% is a reasonable area of growth. Pray, can I ask, even if sometimes 7 to 8 is a reasonable area of growth, is our country having 7 to 8? Are your Central Statistical Office figures, not ours, which show 6% equal to 7 to 8? The third answer we heard was that global factors. This is a delightful answer. We didn't hear a fourth and fifth answer, which is the answer the government and the finance minister gives for every issue. Legacy factors. And the fifth answer is the Congress is to blame. Now please examine these 5 answers and tell me whether they are answers which this country is supposed to get. Is this the accountability which this government is supposed to give? In fact, friends, the truth is sad, the truth is the opposite, the truth is stark, and the truth is deplorable. First, you changed the base year from 2004 to 5 to 11 to 12. Remember, one of the first things which this government did in 2014. Base year change is the first thing, obviously, to inflate, exaggerate, and improve. Let us leave that because we are only using that now. On that base year change, you have a clear line, if you draw, of industrial production. Can you imagine how much this Prime Minister has spoken of Make in India? And the heart of Make in India is index of industrial production. What is Make in India without industrial production?
he would be worse than Hamlet without the Prince of Denmark. The industrial production index shows a steep decline, roughly from just under 5% to just over 2%. We have the figures here from 2014 to 2017 now. The Central Statistical Office, the Statistician's Office, which is an independent Government of India body, which only crunches numbers. And numbers don't lie because they are fresh from the baker's oven, says that these are the first pangs, more are in store. That's running on your channels now, hardly a few hours ago. The answers of the government I gave you are completely vague. They all establish that there is a massive downslide. We don't want to smirk, we don't want to snigger, we don't want to be seeming happy and contented. But I could as well use the phrase, we told you so. And mind you friends, this is the first quarter. It's like a train which is going at fast speed. If you put the brakes, those brakes, the train stops after 1 kilometer or 2 kilometers. Well, you've seen the first stage measured till March. Let us wait for the next stage measurement, and we will have to unfortunately repeat the phrase, we told you so. And lastly, on this aspect, I took a briefing with you the other day on jobless growth, where I started by saying, I am assuming for the moment, not conceding, not accepting that there is growth. I said, even if there is growth, it is jobless growth. So there are two words, jobless and growth. Now the CSO tells us that there is neither jobs nor growth. Neither. न कुआं न खाई. दोनों तरफ से हम मार खाए हैं. और विशेष रूप से जो आपने कृषकों के बारे में कल सुना उपाध्यक्ष से, कांग्रेस से, उसके बारे में भी कोई भी जवाब नहीं है. एक जवाब मैंने आज सुना तो मैं चौंक गया, अचंभित हो गया. अभी आज ही सुना है मैंने, और बहुत ही निराशाजनक और दर्दनाक जवाब है, वो भी मुख्यमंत्री जैसे पद के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा. वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से करवाया ये. मुझे एक तरफ पीड़ा है, दुख है, एक तरफ गुस्सा है इस प्रकार का जवाब सुन के एक संवैधानिक पदाधिकारी से. आपके प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एक व्यापक प्रदेश माना जाता है, कृषक क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी. महाराष्ट्र में आजकल हज़ारों लीटर दूध फेंका जा रहा है, फल और सब्जियां फेंकी जा रही हैं. लाखों की तादाद में कृषक बाहर निकल आ रहे हैं, अभियान कर रहे हैं, प्रोसेशन कर रहे हैं, और आप जवाब दे देंगे कांग्रेस से किया है. ये मैं समझता हूँ अपमान है इस देश के किसान का, महाराष्ट्र के किसान का. ये एक दयनीय टिप्पणी है जिससे उस प्रदेश की सरकार का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट होता है कि न वो कोई समर्थन देने वाले हैं कृषक को, न एमएसपी बढ़ने वाली है. हमने आपको इसी मंच से पहले एमएसपी के आंकड़े दिए हैं कि 15 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 50 गुना जो बढ़ी हैं एमएसपी हमारे कार्यकाल में, अब 2-2, 3-3 गुना बढ़ी हैं. और भविष्य में कोई भी बढ़ने का इसका अंदेशा नहीं लगता एमएसपी का. उच्चतम न्यायालय में इस सरकार ने हलफनामा दिया है कि एमएसपी नहीं बढ़ाई जा सकती. तो इन सब को देखते हुए क्या ये गलत है कहना कि इस देश का शायद सबसे बड़ा एनपीए बीजेपी है, सबसे बड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बीजेपी है. किसान बेहाल है, बेजार है, फल सब्जियां सड़क पर फेंकने पर मजबूर है, लाचार है, ऐसी चीज़ें कर रहा है वो. आत्महत्या तो छोड़िए, हमने अलग से आपके समक्ष वो बहुत दयनीय आंकड़े रखे हैं. लेकिन इस प्रकार से तमिलनाडु से लेके महाराष्ट्र तक, उत्तर से लेके पूर्व तक कृषक अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहा है, और मुख्यमंत्री जैसे पदासीन व्यक्ति बोल रहे हैं कि इसने करवाया, उसने करवाया. मैं समझता हूँ इसकी जवाबदेही है, तुरंत होनी चाहिए. हमको बच्चा नहीं समझना चाहिए.
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ जानते नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं मांग सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग सकते। आखिर जब हमने आपके समक्ष आपके खुद के सीएसओ के आंकड़े रखे हैं, जो स्वतंत्र निष्पक्ष एक अलग विभाग है सरकार का, सिर्फ आंकड़ों का विभाग, और वो बताता है कि आप 6% के आसपास घूम रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? वित्त मंत्री माननीय महोदय कहते हैं ऐसे जवाब जिनका कोई तर्क नहीं, कोई तुक नहीं। एक तरफ कहा जाता है कि डीमोनेटाइजेशन शायद सिर्फ वही एकाकी कारण नहीं था इस ग्रोथ के कम होने का। ये क्या उत्तर हुआ? दूसरा कारण दिया जाता है कि कभी कभी 7 से 8% विकास अच्छी दर है। ये तर्कविहीन, उद्देश्यविहीन टिप्पणी है, इसका कोई मतलब नहीं है। कहाँ तो हमको 7 से 8 मिल रही है और कभी कहीं है या नहीं है, उसका भारत से क्या संबंध है? तीसरा, ग्लोबल फैक्टर्स। मैं समझता हूँ कि अगर ग्लोबल फैक्टर किसी देश को मिल जाए कि ऑयल की कीमत जो आजकल पिछले 2-3 साल से चल रही है, तो लोग डांस करना शुरू कर दें स्ट्रीट्स पे। ऐसे ग्लोबल फैक्टर के बाद आपकी दशा ये है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण होती है हर देश के लिए। चौथा और पांचवा कारण नहीं दिया, दया की हमारे ऊपर सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री ने। चौथा कारण उनका हमेशा होता है लेगेसी फैक्टर्स। तो अब 3 साल बाद शायद वो लेगेसी फैक्टर शब्द का प्रयोग कम कर दिया है, क्योंकि लेगेसी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल कब तक बोलते रहेंगे। और चौथा, जो फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र में कहा, वो इन्होंने नहीं कहा, कांग्रेस दोषी है। तो मैं समझता हूँ आप अपना निर्णय कर लें। ये दयनीय स्थिति है और इस प्रकार के मजाकिया कुतर्की जवाब आ रहे हैं इस दयनीय स्थिति के लिए। धन्यवाद। I think this question should be put to the government. The government should disown its own chief statistician, or as is more likely, transfer him or sack him. Because this government can't hear any inconvenient voices, even if those voices are speaking the truth. But numbers don't lie and statistics don't play politics. We told you so is an acronym I could use again and again. But remember, the statistician has not said this is the beginning of the end. According to me, this is the beginning of the end of the growth curve which UPA has given to this country. And this is the first quarter, the second quarter, and clearly the statistician meant that, although we don't have the figures fully, is going to show again exactly what we said. But you are not going to get an acknowledgement of that by the government. So this is tragic, this is terrible. Let us not expect apologies, but let there be an acknowledgement. Because without an acknowledgement, how can you reform? How can you improve? How can you change? I think you have rightly just exposed the biggest fallacy. In that case, 10 years of our government with 14 state elections were absolutely fault-free on that definition. Not a single mistake was made by the UPA, because we had 14 odd state elections and 2 central elections. And in less than 3 years, in 3, 4, 5 state elections, this arrogance has translated into a notion of infallibility. You judge for yourself. Does the statistician's figure, which is in front of you now at 6%, making India a cease of doing business, not a make in India, not an ease of doing business, but a cease of doing business, and cease is spelled not S-E-I-Z-E, but C-E-A-S-E. Well, if that is to be said, is validated by an election result, well, I can only say that if the result in UP will become a license to kill for this government to keep on achieving 6
and then 5.9 and then 5.8% growth. Well, good luck to them. कोई क्वेश्चन इधर था? सॉरी, हाँ. देखिए इसकी नहीं, देखिए ये अलग अलग दलों के अलग अलग स्टैंड हैं. न मेरे पास समय है, न मेरा अधिकार क्षेत्र है कि उन पर टिप्पणी करूं कि दूसरे दलों का क्या स्टैंड है. हमने अपना स्टैंड बड़ा स्पष्ट किया था. मैं खुद उस बैठक में बैठा था और उसके बाद हमने अपना स्टैंड उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी बड़ा स्पष्ट किया था. प्राथमिक रूप से अभी हमने कहा कि जब आप पहले ये देखिए कि वीवीपीएटी का क्या असर होता है. हमने ये भी कहा कि, और मैं तो मानता हूं कि हमारे बार बार कहने से ये फ़र्क हुआ कि वीवीपीएटी 55 या 50 हज़ार आपके पास हैं और 16 लाख ईवीएम्स हैं और उच्चतम न्यायालय का 3 वर्ष पुराना आदेश है, 3 वर्ष पुराना, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, कि आप तुरंत लगाइए वीवीपीएटी. तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या उत्तर है? और सरकार बार बार मांगने के बावजूद, चुनाव आयोग के मांगने के बावजूद अभी तक रुपए नहीं दे रही है. इस अभियान को मैंने यही चीज़ें आपके समक्ष यहाँ से भी कही थी. उसके बाद आपने देखा कि कम से कम एक घोषणा बड़ी स्पष्ट हुई कि ये 3000 करोड़ में 2019 के पहले. हम उससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि अभी और चुनाव हैं, 18 में चुनाव हैं, 17 में भी चुनाव हैं, और ये नहीं समझता मैं कि वो वीवीपीएटी के बिना होने चाहिए. लेकिन फिर भी क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय का आदेश है, कम से कम वो देखें कि ये कार्यान्वित होता है कि नहीं. और पार्टियों के 2 अलग स्टैंड्स हैं. कुछ पार्टियों का है कि वीवीपीएटी से हमें कोई कनेक्शन नहीं है, हम चाहते हैं कि ईवीएम ही हटे. ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं रहा है. दूसरा, कुछ पार्टियों का स्टैंड ये है कि हम चाहते हैं हैकाथॉन में आना, लेकिन हैकाथॉन में आने की जो कंडीशंस हैं, नियम हैं, उससे हम नहीं हैं सहमत. तो ये अलग अलग मुद्दे हैं, आप बाकी पार्टियों से पूछें. Good question, because when you talk of errors and a miss, you obviously don't look at the detail, and the detail will answer your question. Firstly, of course, all those who ask this question, and by that I mean the BJP and several other parties, constantly raise it. Like an ostrich in the sand, forget to ask the question of the Akalis or of the Shiv Sena, 2 of their longest allies. Dynasty is forgotten at that time. But what Mr. Rahul Gandhi said illustrated a very interesting point. Take a simple example. From 1989, we have passed 28/29 years. Rajiv Gandhi was Prime Minister in 1989 last. For the last 29 years, a Gandhi, despite winning elections, Mrs. Sonia Gandhi in fact resigned contrary to our advice and refought the election on the office of profit issue. Despite being elected again and again, took no office. That's dynasty for you. And secondly, in these 29 years, 15 years have been Congress. 16 years. So let us put things in perspective. I think this has lost its logic. It's one of those bugbears like 370 and Ayodhya, which is dusted off and taken out by the BJP and nothing more at all. Yes. Sir, I'm Sakumar from Republic. Sir, Republic TV has an explosive coverage. It's been almost 24 hours now, and this, of course, is pertaining to the damning allegations made by Justice Dhingra Commission. And in this report that we have procured, there are clearly, it's talking about Robert Vadra, his alleged nexus with the then Haryana Chief Minister Bhupendra Singh Hooda, and how Mr. Hooda actually out of his way, went out of his way to give profit to Robert Vadra and his so-called shady. Can I now answer? The question is, we haven't ever, whenever this question has come in the public domain, Congress has been silent on it. And for a change, without
there a question? I actually forgot the question because it's a very short question. By the time I came to answer it, I forgot the question. But anyway, I have partly answered it from this very podium. Perhaps you were missing. And I am fully prepared to answer it today. But let me tell you why I am not answering it. I am not answering it because Republic has launched a malicious witch hunt based on personal prejudice and personal vendetta of those who are running and managing Republic. And we are not here to answer questions from such quarters. But it's a simple question, sir. Justice Tigra has come up with a report. It states facts. My answer to the supplementary is the same as my answer to the first question. Give others chance. You should carry my answer. This is my answer. You should carry my answer. Let it. नहीं, ये बात सही नहीं है. देखिए, सरकार के पास ये यंत्र तंत्र होते हैं. ये निर्णय नीतिगत वो लेते हैं. डे 1 से 2014 से इसमें हमने प्रकाशित किया है, बोला है, बताया है. आखिर हम भी तो सरकार में 10 साल तक, हमारे वक्त भी 2008 में भूगोलिक प्रॉब्लम हुई थी, आपको याद है, दरें गिरी थी, हमारे वक्त भी कठिनाइयाँ आई थी. हम भी बदल सकते थे. बदलना, मैं ये नहीं कहूँगा कि इलीगल है, बट बदलना मिसलीडिंग हो सकता है. हमने क्यों नहीं बदला? हमने जैसा है वैसा कहा, जैसी कहानी आपके सामने रखी. इस सरकार के आते ही पहला मुद्दा उन्होंने उठाया और उसके बाद हमने दसों बार यहाँ से प्रकाशन में बोलने में लिया है. लेकिन जब नियम बदल गया है तो बदल गया है. आज जो हम बात कर रहे हैं वो उस बात का मजाक उड़ाती है जो बात इस सरकार ने 2014 में की. अरे भाई, बदलने के बाद अगर आप 6% दिखा रहे हो तो दयनीय नहीं है क्या? और तर्क ये दे रहे हो कि भूगोलिक कारण है. डिमोनेटाइजेशन सिर्फ अकेला एकाकी कारण नहीं है. तो इस बात का भी लेकिन लिया है, बिल्कुल लिया है, कई बार लिया है. I think he has a precedent then. You just cited the precedent. No, I think you have to ask this question. I'm sure there must be reasons on the file. There must be material and you have to ask that question. If you want, I will check up and let you know. This is a local issue of Punjab government. I'm sure we'll have to check up the files. So I'll just take a liberty with just coming. So when I asked you that question, I just want to understand why is it that the other fellow journalists are getting so uncomfortable with the question? We are entitled to ask questions. You are entitled to. Now this is very interesting. It's very interesting. You should ask this question on the mics to each of the people outside. Please spare me. And you are taking liberties not here but on your channel. On your channel. Thank you. Thank you. I think the mala fides is shown by the fact that this is unique to one person and one channel.